we have to find the modulus and the argument of each of the complex number. Okay, so we have the first question here, z equal to -1 minus iota root 3. So if I talk about, can we say that this is the x part and this is the what, y part? -3 is the y part. So here both is negative, x and y both are what, negative. So can we say it belongs to which quadrant? Yes, if x is negative and y is negative, both are negative, it Third belongs to what, quadrant. third quadrant. Okay, first we'll talk about what is the modulus of the complex number. We know that modulus of the complex number is basically, what is the formula? It is the real part of z whole square plus imaginary part of z whole square. Yes, this is the formula. So if I talk about what is the real part in the first complex number, that is -1. So -1 whole square plus what is the imaginary part, that is minus root 3. So minus root 3 whole square. So can we say it is basically equal to 1 plus root 3 is 3? The answer is 1 plus root 3. 1 plus root 3 whole square. This is 1 plus 3. So root 1 plus 3 is 4. Root over 4 is 2. And we know that modulus should be always positive. So the answer will be 2. So we got the modulus of z. Now after that we have to find out what is the argument of z. What is the argument of z? Argument of z, it depends on the what, the quadrant. Right now it lies where in the third quadrant. That's where the answer will be the minus pi plus tan inverse mod of y by x. Yes, mod of y by x. So if I apply the formula, can I write minus pi plus tan inverse, what is the mod of y? Y is basically minus root 3 upon x is -1. If can we cancel this, we'll get minus pi plus tan inverse root 3. Now tell me what is the value of root 3? So minus pi plus what is the value of tan inverse root 3? 60 degrees. 60 means pi by 3. So can we say that if I solve this, we'll get minus 2 pi by 3. So the argument of that complex number is minus 2 pi by 3 and the modulus is 2. Everyone clear with this part? सर रेडियन में निकालना जरूरी है क्या अगर डिग्री में निकाला तो? मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर जो रहता है वो रेडियन में रहता है, तो आप यदि रेडियन में लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, यदि पॉसिबल है तो। बट यदि आपको नहीं पता है कैसे कन्वर्ट करना है तो नो इशू, यू कैन राइट ऑन द डिग्री, और अल्टीमेटली मैं ही तो पेपर चेक करके आपको देने वाला हूँ, तो नो इशू, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको मैंने सिखाया हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, रेडियन इनटू डिग्री। नहीं सर, वो उसका प्रॉब्लम नहीं है सर, मेरे को बस पूछना था किसमें ज्यादा कर सकते हैं दोनों में, बट मोर स्टैंडर्ड आपका इसमें रहता है, रेडियन में रहता है, ठीक है। Now for the next question we have z equal to minus root 3 plus 1 iota. Iota means 1 I. Now this is your x and this is your y. So x negative, y positive. Yes. First we'll find out the modulus, that is root over minus root 3 square. Yes, minus root 3 square, that is 3 plus 1 square. So we can say that this is 3 plus 1. The answer will be 2. Now argument of z. Which quadrant lies? X is negative, y is positive. Which quadrant? Second. Yes, sir. What will be the argument of z here? It will be the in the second quadrant. What is the argument of z? Pi minus tan inverse. Minus tan inverse mod of y by x. So what is y? Y is 1. And what about the x? That is minus root 3. So pi minus tan inverse. We know that there is no effect of the negative. Okay, in the modulus. So kitna ho jayega? Just 1 by root 3. So the pi minus tan inverse 1 by root 3 is what? 30 degree, pi by 6. So if I solve this, we'll get pi by 6. So this is the argument and this is the modulus. Okay, just write it down. So we have to convert this all the complex number into polar form. The first question, the question number 3, we have the 1 z equal to 1 minus I. 1 minus I means basically what? 1 minus 1 I. Can we say that x is what? X is positive and y is negative. X positive, y negative. Which quadrant? Fourth quadrant. Fourth quadrant. So it is in the fourth. Now if you want to find if you want to write on the polar form, so what is basically polar form? The polar form is z equal to mod of z in the bracket cos theta plus iota sin theta. This is the polar form. So first we have to calculate mod of z, that is equal to root over 1 square plus minus 1 square. So it is root over 1 plus 1, it is equal to root 2. This is the modulus. Then we have to calculate the argument. If the theta is lies in the if the complex lies in the fourth quadrant, what is the argument? बताया था कल, क्या होगा argument? Minus tan inverse
मॉड ऑफ y बाय x, जो पहला क्वाड्रेंट है उसका क्या करो, नेगेटिव कर दो बस, तो थर्ड फोर्थ में वाला मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स व्हाट इज y, -1, x is 1, but there is no effect of tan the 45 negative degree. sign in the modulus, so tan inverse 1. So can we say the minus 45 degree, it means the pi by 4. कल बताया था tan inverse 1 का वैल्यू कितना होता है, it is pi by 4, so minus pi by 4. So we can write on the now z equal to mod of z, that is root 2 times of cos minus pi by 4, okay, plus iota sine minus pi by 4, and this will be the answer. Okay, don't solve this further. इसके बाद भी अपना दिमाग लगा कर आगे सॉल्व मत कर लेना, नहीं तो फिर से वो कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा. This is the question third. Okay, now try to solve question number 4. आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं जरूरत है 4. Z equal to -1 plus I will solve direct this. So mod of Z will be the root over 1 plus 1, that equal to 2, root 2. Okay, and what about the theta? So if you look at this x is negative and the y is positive. X negative, y positive in the second quadrant. The pi minus tan inverse, bolo mod of 1 by -1, that is pi minus tan inverse, bolo, it is 1, and theta will be equal to pi minus, what is tan inverse 1, that is pi by 4, so answer will be 3 pi by 4. So Z will be basically root 2 times of cos 3 pi by 4 plus iota sine 3 pi by 4. Okay, so with the help of this method you can solve. Okay, with the help of this method you can solve the like same all the thing, the question 5 6 7. यहाँ पे 3 plus क्या करेंगे, 0 i कर लेंगे. ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, बोलो जैसे i इक्वल टू बेसिकली 0 प्लस 1 i, ऐसा कर लेंगे 1 i. एंड आई टोल्ड यू कि इफ द पॉइंट विल बी लाइज ऑन द एक्सिस, ओके, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा. पॉजिटिव वाई एक्सिस पे रहेगा तो थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा. पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई होगा, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे रहेगा तो थीटा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 होगा. ये मैंने कल आपको बताया था, यू कैन रेफर दैट थिंग. जैसे मुझे इसमें आर्गुमेंट निकालना है तो -3 कहाँ पे है, जैसे मैं क्वेश्चन 6 की बात करता हूँ, क्वेश्चन 6 की बात करूंगा तो क्वेश्चन 6 में हमें जो z दिया है वो कितना दिया है, -3 दिया है. और -3 वो कहाँ पे है बताओ, मॉड ऑफ z तो 3 हो जाएगा, मॉड ऑफ z विल बी 3, बट थीटा कितना होगा, तो कैन वी से दैट -3 लाइज ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस. समझ में आ रहा है? हेलो हाँ सर. शुक्ला जी. यस सर। हाँ सर, पाई हो ओके, जाएगा ना फिर. तो इसका थीटा का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पाई हो जाएगा. एंड इन द फॉर्म, यदि फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 टाइम्स ऑफ इन द ब्रैकेट cos पाई प्लस आयोटा sin पाई. हाँ जैसे मैं सर, बोलूंगा पता है. क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में z इक्वल टू आई दे रखा है, मतलब 1 i दे रखा है. तो पहले वो तो मॉड डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी डिटरमिनेंट बोला, मॉडुलस ऑफ z कितना हो जाएगा 1, थीटा कितना होगा, तो पहले बताओ 1 i कहाँ पे रहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव 90 डिग्री एक्सिस पे रहेगा. बताओ. तो 1 i जो है वो पॉजिटिव एक्सिस पे रहेगा, इसलिए उसका जो आंसर हो जाएगा पाई कितना बाय हो 2. जाएगा, डायरेक्ट पाई बाय 2. तो थीटा इस केस में कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं यदि आपको पॉइंट एक्सिस पे है तो. ओके, इसलिए मैंने कल आपको बता दिया था आर्गुमेंट ऑफ z किस तरह से कैलकुलेट करेंगे जब आपका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा हो, एक्सिस पे लाई कर रहा हो. क्लियर? यस। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 2. सो द z विल बी द डिटरमिन दैट mod of z in the bracket cos theta plus iota sin theta, that is a modulus of z. So z equal to 1 in the bracket cos pi by 2 plus iota sin pi by 2. Okay, concept conjugate of complex number, conjugate of complex number, which is denoted by basically z bar. Okay, what is the meaning of conjugate of the complex number? The conjugate of the complex number is basically, it is called as the mirror image of a complex number about the x-axis. बट उतना चीज आपको समझ में नहीं आएगा मिरर इमेज कैसे निकालते हैं नहीं निकालते, तो हम बेटर पे आपको एक चीज बता रहा हूँ, बस उतना करना है. तो कंजुगेट मींस रिप्लेस iota by minus iota, that is called as a conjugate. Means suppose if you have the complex number z equal to
the x plus iota y. And if I have to find their conjugate, what I will do? I will just replace I by minus I, okay, into y. Means z bar becomes x minus iota y. Clear? Now suppose if you have another complex number w, which is equal to a minus iota b, a minus iota b. Okay. Now if I have to write down the conjugate of that complex number w, I can say that it will be the what, a minus I की जगह minus I रखेंगे तो minus 1 is plus I b हो जाएगा. This is the complex, this is the conjugate. Clear? Now there are some properties of conjugate. Okay, there are some properties of the conjugate that we'll discuss now. The first property is, okay, suppose if you have the complex number and if you take the conjugate of that, and further if you take the again conjugate of that, you will get the same complex number. If you want to prove for this, let's assume that z equal to what, x plus iota y. What will be z bar then? It will be the x minus iota y. What about z bar to the again the conjugate of that complex number? फिर से लोगों को कितना मिल जाएगा? It is x plus iota y, and which is equal to z. So z bar to the power z. So z bar to the power bar, it will be what? The z only. That is the first property of the complex number, the conjugate. The second property, suppose I have the one z1, another we have the z2. If I take the conjugate of the whole complex number, z1 plus z2, it will be basically the addition of the separate conjugates. What is the meaning of this? Suppose we have the z1 equal to x1 plus iota y1, okay, and z2 equal to x plus iota y2. What about z1 plus z2? z1 plus z2 will be the x1 plus iota y1 plus x2 plus iota y2, and we know that we have to add the real part with the real and imaginary part with the imaginary. So x1 real hai, x2 real hai, so can we say that it will be the x1 plus x2? Yes, plus. What were the y1 and y2? If I take the I common, we'll get, I can write down y1 and y1 plus y2. Now if I take the conjugate of this, z1 plus z2 bar, that will be the Minus. same x1 plus x2. Everything will be same, only the change will be the minus I times of the y1 plus, only change the iota by minus iota. Now further, if I solve the, what will be the z1 bar? If z1 is x1 plus iota y1, what is z1 bar? It will be the x1 minus iota y1. What about z2 bar? It will be the x2 minus iota y2. Now if I add this z1 bar plus z2 bar, what I will get? If you add this, can we say that it is x1 plus x2? The minus, if I take the iota common, I will get the here y1 plus y2. And can we say that here this part and this part is equal? Means from here I can say that z1 plus z2, z1 plus z2 complete bar will be equal to z1 bar plus z2 bar. So this is the second property. Okay, third property is if you have the z1 minus z2 bar, and if you're taking the whole complement, the conjugate, then it will be equal to z1 minus z2 bar. You can prove with the help of same formula. Okay, and there is the fourth property also. The z1 into z2, the complete bar will be equal to z1 bar into z2 bar. You can prove this formula also. Then we have the fifth property about the conjugate, that is z1 by z2 complete bar will be equal to z1 bar by z2 bar. The referring the same concept z1 and z2, you can prove each and every formulas. Okay, so write down all the properties which is related with the conjugate, and with the help of conjugate. Okay, and there one more property, the sixth one, very important. Z into z bar will be equal to mod of z whole square. This is a very important property for the numericals part. Okay, how to prove this? Let's z equal to, I'll assume that let z equal to x plus iota y. What about z bar? It will be the x minus iota y. Yes, z bar will be the what? X minus iota y. Understood. Now if I multiply this z into z bar, can we say that it will be equal to what? X plus iota y into x minus iota y. So z into z bar will be equal to what is a plus b into a minus b. A square minus b square, so I square y square. I square is minus 1, so z into z bar will be equal to what? X square plus y square.
and we can I write on this is what z into z bar will be root over x square plus y square ka whole square, and we know that root over x square plus y square is mod of z, so now mod of z whole square. So we got one concept here, and that is z into z bar is mod of z whole square. Means multiple of complex and their conjugate always will be equal to, if I write on the in the proper way, multiple of the complex and their conjugate will be always equal to what? The real part of z whole square, real part of z whole square plus imaginary part of z whole square. कहां से आया? यहां से आया. देखो कि z इंटू जेड बार जो है वो किसके बराबर आ गया? एक्स स्क्वायर. एक्स क्या है? रियल पार्ट ऑफ जेड. वाई क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड. रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू यूज. ओके, तो आप लोग इनको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो और फिर हम क्वेश्चंस. So we have to calculate find the conjugate of the what 1 upon 3 minus iota cos pi by 3. जल्दी बता. Half. So first try to solve. Let's assume that this is the complex number z equal to 1 upon this. So it in the half. It will have So z equal to 1 upon 3 minus 6 minus I by 2. So z equal to, can we say that 2 upon 6 minus I? Yes. yes sir. But if you want to find out the anything from the complex number, you should have okay the complex number in the form of a plus I. Denominator में complex number नहीं रहना चाहिए, तब आप उसका कुछ निकाल सकते हो. ठीक है, तो चलो पहले तो ये करो कि डिनोमिनेटर में से कॉम्प्लेक्स नंबर हटा दो. कैसे करेंगे? जस्ट रैशनलाइज 6 प्लस I अपॉन 6 माइनस I. सॉरी 6 प्लस I कितना हो जाएगा? 12 प्लस 2I. नीचे में कितना होगा? 6 स्क्वायर माइनस I स्क्वायर. minus 12 plus 1 2I divided by 36 plus 1. Okay, I square is minus 1 is plus 1. So can we say 12 by 37 plus 2 by 37I? So we have the complex number z equal to what? 12 by 37 plus 2 by 37I. This is the complex number. Now we have to find उसका their minus. conjugate. So the answer will be 12 by 37. The only minus 2 by 37 into I, and this will be the complex conjugate. Okay. हाँ सर यही आंसर है. तो अभी जो हमें नेक्स्ट टॉपिक करना है इसमें तो क्वाड्रेटिक है. क्वाड्रेटिक में एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना है. इट इज अ वेरी इजी वन. ओके, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो. Then we'll move to the next part, that is the conjugate and the different problems related with the complex number. So let's talk about this quadratic. Question number 2. If I solve this quadratic, okay, then how to solve this quadratic? एक और देखते हैं क्या है. We have to solve this quadratic. So we know this is a quadratic equation. So the x, we know the formula for x. Yes, apply the direct that formula. What is the formula for x? That is a minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, 2a. where this is a, 1 is b, and this is what? C. So if you put the value here, so minus b is 1 plus minus root over b is 1, so 1 square minus 4. What is a? A is 2 and c is 1 divided by 2 into what is a? A is 2. So can we say that it's a minus 1 plus minus root over 1 minus 8 divided by what? 4. Now further if you solve this, can we write on this is a minus 1 plus minus what is root over, we'll get 1 minus 8 as a minus 7 divided by 4. So can we write on this is the minus 1 plus minus what is minus root 7. The minus root is what? I, and then root 7 divided by 4. That implies you have the two value of x. X is minus 1 plus iota root 7 by 4. Another value of x is minus 1 minus iota root 7 by 4, and this is the answer. Okay, so this way you have to solve the quadratic. बहुत easy होता है quadratic solve करना, तो उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. आपको just quadratic equation लिखना है और उनको solve कर देना है. और जहां पे negative आएगा रूट के अंदर में, वहां पे आपको क्या करना है? just minus iota ले लेना. क्वेश्चन हुआ है? ये क्वेश्चन हो गया? जल्दी बताओ. Priya? Hello? Am I audible? नहीं सर. Okay. Listen, we have to prove that x square plus y square, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बताओ. ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? Yes. और तो ये उनका क्या है?
रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर। तो रियल पार्ट के स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के स्क्वायर कब होता है? जब हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड आई को माइनस आई से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा, एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा, और इधर कितना होगा, ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ए प्लस आई बी। ठीक है, ये मान लो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये मान लो आपका सेकंड इक्वेशन, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू ए प्लस आई बी, ओके, अपॉन ए माइनस आई बी इंटू क्या आएगा बोलो, ए माइनस आई बी minus I. अपॉन ए प्लस आई बी। Now this is the complex, this is the conjugate. Complex into conjugate, तो complex का real part square plus imaginary part x square plus y. This is the complex, this is conjugate. तो यहाँ पे क्या होगा, real part square plus imaginary part square. This is the complex, this is conjugate. यहाँ भी क्या होगा, real part square plus imaginary part square. ये दोनों cancel हो गए, कितना हो जाएगा 1. So we got the x square plus y square equal to 1, and this is the answer, and this is the proof. Clear? So this way you have to deal with the long type of question. अब यहाँ पे क्या करता है, एक और टाइप के स्टूडेंट होते हैं, पहले वो रियल पार्ट को लेफ्ट साइड के रियल पार्ट को राइट साइड के रियल पार्ट से इक्वेट करते हैं, ओके, लेफ्ट साइड के इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करते हैं, फिर एक्स वाई का वैल्यू पुट करते हैं और वहां से फाइंड करते हैं। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, उससे बेटर है कि आप कंजुगेट मेथड अप्लाई कीजिए, आपको बहुत जल्दी आंसर मिलेगा। क्लियर?